हाय हेलो, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे एक सिंपल सा स्ट्रमिंग पैटर्न उकुलेले के लिए, जो कि है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन या सो इसमें अगर आप कॉर्ड्स इंक्लूड करोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको नहीं इंक्लूड करना है तो ठीक है, यू कैन जस्ट होल्ड द नेक ऑफ द यूकेलेले, द स्ट्रिंग्स, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द स्ट्रमिंग पैटर्न फर्स्ट एंड उसके बाद में आप कॉर्ड्स इंक्लूड करिए। सो आई विल शो यू अ डेमॉन्स्ट्रेशन फर्स्ट एंड देन यू कैन प्रैक्टिस अलॉन्ग विद मी। सो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, सो इट इज डाउन या। सो अगर इसको कंटिन्यूस बजाना है तो ये आएगा या। सो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैंने बजाया है सी, एफ एंड जी पे। अगर आप चाहे तो कोई भी कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हो, कोई एक कॉर्ड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको चेंजिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो। So what you can do is you can just hold C major chord, and you can practice on C major and A minor because these are the simplest of chords on ukulele. So basically what you can do is yeah. Cool. I hope you learned something today and I hope you keep practicing, and I'll see you soon. Please like, share and subscribe to my channel. Bye.